Introduce yourself. Myself, Tanishq. I'm going to circle those elements who have a different electronic configuration. Okay. First is chromium, and second is copper, zirconium, niobium, Okay. Silver तक के elements है ना? yes, And also lanthanum. 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 Okay. So you can start filling up their electronic configurations. Let's start. So, 1s1 hydrogen and yes, S1 S2 So 1s2 के साइड में क्या लिखेंगे? Is equal to is equal to 1s1 the first inert gas. inner gas, noble gas, हाँ, तो क्या लिखेंगे? noble नहीं नहीं नहीं, कैसे? He. Correct. You have to shorten the configuration. So you use inert gas configurations. This H 1s Wrong. Again 1s1 will come. 2 That's why I say rub it and write the full configuration and then shorten it. See, if you take shortcuts at this particular point of time, you will go wrong. That does not mean you will do this way the entire time. 2 comma No, electronic configuration. no. Tell the full series. Come on. 1s1 1s1 2s2 2p6 हाँ, so 1s1 is over. After that, you have to write 1s1. 1 and 1s2. 1s2 After that, 2s1 yes. 2s1 Next one. Remember now? yes. This How many electrons does beryllium have? 4. Yes. So 1s2 2s2 boron 1s2 2s2 3s1 Are you sure it is 3s? Think again. 2p sorry 2pc So before every element, please tell the entire Yes. sequence. 1s2 2s1 1s2 2s2 3p1 3p1 No. Think. Tell the entire entire sequence. 1s2 2s2 3 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 करेक्ट. एटलीस्ट यहाँ तक बोल के फिर करिए. 1s2 for carbon 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 2p6 2p कितना? 2p2 Add them and check if it adds up to 6. yeah 1 2 3 4 5 6 Correct. It has 6. Correct. Nitrogen 1s2 2s2
2p3. Hmm. Two s2 2p3. Two s2 2p6. S2 2p6. And so what is this? And neon. So is equal to Ne Hmm. Ne10. Correct. Sodium. 1s2 2s2 2p6 3s1. And can you tell all the series again, the entire one? Otherwise, 1s2 yeah. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. After 4s2, does 3d10 come? So here No, 1s2. 1s2 2s2 2p6 Hmm. 3s2 उसके बाद 3p6. 3p6 उसके बाद 4s2 3d10. ओके. Divit, easy. Sir, it says to draw. Should I draw? It says to draw. P6 3s2 3p6 3p5. हाँ. Because अभी तक chlorine is not inert, correct? Yes.
Fluorine is highly reactive. It does not have fully filled orbitals. But the next one has fully filled orbitals. Argon. 3s2. Argon, total of 18. Yes. Potassium. 1s2. 2p6 3s2 3p6 4s2. 4s1. Good. N2. 4s2. बहुत बढ़िया. अगला स्कैंडियम. Scandium. 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 6 4s2 and 3 3d1. Correct. You have entered the D block block elements. Yeah, continue. Then go to the next question. Go to arithmetic progressions. Correct, no? Next one, yeah. S2 2p6 s2 बट क्रोमियम को आपने सर्कल किया है. yes sir. अब वो ट्रांसफर करूँगा 3d3 so दिस इज रॉन्ग. sir तो उसको I'm going right on the correct one you're writing. Yes. Okay, so you rub and write the correct one there. direct. Yeah. And the previous one also you correct. Yes. It is 3d4 child. क्योंकि ऊपर 3d3 आ गया था. अभी क्या आएगा? अगर आना है तो 4 हाँ, पहले 3d4 आना चाहिए वहां पे. Correct. You should get 3d4 there, but that does not happen. transfer. नहीं, उसी को रब कर लीजिए. रब करके write the correct configuration now. Here Yes. Rub. हाँ. Now it becomes 4s. 1 Correct. 4s 1 and 3d5. 5 15 4s1 3d5 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 um,
D5. 3 क्या 5? 3 to the power 5 लिखा है आपने. 3D. हाँ, correct. Correct. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. That is iron for you. Yes. So we have an entire chapter called D block. In that we will discuss more of these properties. We will discuss oxidation states. You first write the wrong one and then immediately rub and correct it. Three S two, 3P6, 4S. 4S2, 3D9 आना चाहिए, Yes, sir. है ना? 3D9 लिखिए, है ना? But that does not happen. Yes, sir. Just rub the upper parts, yeah. The 2 and the 9. yes. Instead it becomes 1 and yes, 1 and 9. no. Where did the electron go then? Sorry, here. So 9 will become 10. yes, Yes. Yes, sir. fully filled D Block. orbital. So 2S2, 2P6, S2, 3P6, 4S2, 3D, As usual it will be 3D 9. 9 or 10. देखो, Yes. when you go from copper to zinc एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, Yes, sir. वो कहाँ जाएगा? D. वो D तो ऑलरेडी भरा हुआ है 10 से, कहाँ जाएगा? 4S2 हो जाएगा. 4S2. हाँ, 4S2. नहीं 4S2 सही है, करेक्ट. इज इक्वल टू, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. AR. 4S2. देखिए गिनिए, पहले कितना था? 4S1 Yes, sir. ऊपर 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 4S1, 3D10. नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ जाएगा? 4S2. करेक्ट, 4S2 3D10. Yes. The D will not leave those electrons because it needs it for stability. Stability. Yes. So half filled stability D5, full filled stability D10. पूरा बोलिए. 1S2 2S2 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10. 10, 3D10 के बाद क्या आता है? 4P6, यस, 4P1. आप वो वाला भी याद रख सकते हैं, है ना? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, Public school. फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल. 2S2, 2P6,
सेलिनियम में कितना एल आएगा? सेल मतलब बेचना वाला सेल नहीं है, एससी सिंगल एल आएगा। वैसे वेनेडियम की सिंबल क्या थी? वी थी, है ना? एस सेलिनियम SEL बस। तो अभी पी भर रहे हो, पी ब्लॉक भर रहे हो, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट में इनर्ट गैस आ जाएगा। 4p5 वेरी नाइस। रुबिडियम से आगे बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है? वेल डन। से सरस्वती वक्रतुंड, हाँ सरस्वती नहीं पहले वक्रतुंड। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वायुकुमारा वानरवीरा अंजनीपुत्रा हनुमन्ता बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। जय श्रीराम। वेरी नाइस।